वंदन है, अभिनंदन है। वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का इस सुअवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। A very good morning to one and all present here personally and virtually. Honorable Chief Guest, distinguished guests of honor, respected deans, faculty members, and dear friends. I welcome all of you to the foundation stone laying ceremony of the TiHAN Autonomous Navigation Testbed at IIT Hyderabad. I request our director, Professor B.S. Murthy, to give the welcome address. Good morning, everyone. First of all, thank you to Sri Ramesh Pokhriyalji, Honorable Minister, for joining us in this function, a historical moment where we are setting up a test bed for the autonomous navigation. This is going to be first of its kind in the country, to look forward to developing technologies which will make the country a leader in this particular field. Thank you very much for all of you for joining this. IIT Hyderabad has been doing many innovations in various areas, and this is one such example that is going to be taken up under the leadership of Professor Rajalakshmi. And I'm confident that this will develop science and technology in the field of autonomous navigation for the years to come, so that India can be not only develop technologies in this field, but also show path to the whole world in this particular field. And in this direction, we are going to tie up with a number of industries and work together with a lot of industries to see the dream of our Honorable Prime Minister on Atmanirbhar Bharat becomes a reality, and we would like to be a part of that, cherishing that dream as an institution of eminence. And in that direction, we have been taking a lot of measures in recent times, with coming closer to the industry, so that we work with the industry very closely to see that we realize this dream, all of us together. And we have started a number of academic programs together with industry. For example, things like autonomous navigation related programs such as smart mobility. We have also started programs on additive manufacturing. We have started programs on e-waste management, and many such programs we have been starting together with a number of industries. And we have also started doing a number of projects for the industry and tying up with industries with an intention to develop indigenous products and indigenous technologies. I'm sure this would be a feather in our IITH cap in terms of bringing out technologies that can be of great use to humanity. At IIT Hyderabad, we always define IITH as invent and innovate in technology for humanity. I'm confident that this will be a measure in that particular direction. And I look forward to the support of our Honorable Minister, our BOD Chairman, and also the DST, which has funded this particular project, all of their support and guidance in achieving the goals of this particular mission that we have taken up. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. I request Shri B.R. Mohan Reddy, Chairman, Board of Governors, IIT Hyderabad, to address the audience. माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कीमत की समय आज ये मंच के लिए निकाला है। इसके लिए हम आपकी अत्यधिक आभारी हैं। डॉक्टर पोखरियाल जी भारत की पहली ऐसी शिक्षा मंत्री हैं जिसके पुस्तकों के ऊपर शोध चल रहा है। अब तक करीबन 7 PhD निकला है, 7 MPhil भी निकला है। ऐसा वरिष्ठ नेता हमारे संस्था उपस्थित है, ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर Murli Mohan, Professor B.S. Murthy, ladies and gentlemen, welcome to all of you for this
a great event of IIT Hyderabad. First, let me thank the Department of Science and Technology, the National Mission for Integrated Cyber Physical Systems, for selecting IIT Hyderabad for the technology hub on automation of navigation and data acquisition, which in short is being called as TiHAN. There is a crying need for such initiatives in our country on several counts. To realize autonomous navigation in connected vehicles, we need to develop several technologies like collision control, lane control, cruise control. I can go on and on, but there are several new technologies that we have to develop. These technologies have some very immediate applications and needs too. Let me call out two of them. One on the terrestrial systems, which is basically road navigation. This would save several lakhs of lives. Rather sad I am to quote this number. In 2019, in India, 1.54 lakh people got killed because of road accidents. It was 11% of the global mortality. It is very sad we lost such precious life on account of just accidents. So we therefore need safety for our vehicles. These technologies that I talked about earlier, when they are developed and deployed at scale, can dramatically reduce these accidents. The second one I like to call out is the aerial systems for the autonomous vehicles. And what we are seeing right now is drones are finding a number of applications, and they need these technologies for autonomous navigation. Drones are being used extensively in agriculture and have got very good results. Drones which are taking high resolution pictures are in a position to right now predict 54 different characteristics of the farm in terms of the crop and also the soil. So the end result is the farmer has enormous amount of understanding of what is to be seed has to be sown. He also understands what is the pest and what's the pesticide that has to be used. These are the type of outcomes we are seeing, which are going to be a great benefit to our farmers. Our farmers are in such great distress at this point in time. Technologies of this nature will help them quite dramatically. The third point I'd like to make is that these technologies possibly are available somewhere else. But I think the key distinction that we have to make is that these technologies have to be customized to our environment. They should suit our roads. They should suit our environment. They should be rugged. They should be robust for our people to use. And on top of that, it also has to be at an affordable cost. So I think it's a combination of these things. There's an enormous amount of need therefore, whether it is roads, cars, accidents, and so on and so forth.
where through our students and our faculty, we're addressing several of their social issues, be it is to do with education, it's to do with healthcare, hygiene, and so on and so forth. So that's in very brief, sir. Thank you again for giving us time today. With that, let me extend a warm welcome to all of you and thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. We will now have a look at the journey of IIT Hyderabad. Indian Institute of Technology, Hyderabad was started with a vision to cradle inventions and foster innovation, while equipping our brightest minds to manage the most complex challenges of our times. The Hyderabad's sprawling 570-acre campus area offers a wide array of academic choices, ranging from BTech to PhD in all branches of engineering, science, liberal arts and design. Several Memorandum of Understanding or MOUs with 50+ global universities from Japan, Australia, Taiwan, Europe, Germany, United Kingdom, Canada and the United States amongst others. IIT Hyderabad's placement cell attracts the world's best companies and lays a stepping stone for a bright future ahead for graduating students. With our mission to create future-ready ideators and prepare leaders in education and research, today IIT Hyderabad continues relentlessly on its journey for the advancement of India and the whole of mankind. As fresh IIT graduates, you are entering a world and an India packed with opportunities. There is so much you can do and so much you can achieve for yourselves, for your families, for societies at large, particularly for those less fortunate than you. Please dream big and aim high, and please take risks. The time to do is now. Now I request Professor Kiran K. Uchi, Dean Research and Development, to throw light on the achievements of IIT Hyderabad. Thank you. I'd like to go over our R&D journey of IIT Hyderabad for the past decade or so. The measure of IIT's excellence is the faculty strength. The outputs measure in terms of publications, patents, translational R&D, and the wider impact the faculty creates, and the number of journal and conference publications, and finally, the amount of funding the institute generates. Over the past decade or so, we have grown to 229 faculty till now. Of course, we started with 0 faculty, and this is the growth of the institute. The 229 faculty reflects. And we have generated total funds on the order of 500 crores. That's a fairly large number for a young institute. And we have generated 53 patents. That's a pretty substantial number compared to any other institute that you would take within the country or elsewhere. About 1,700 publications, staggering number. We have at any given time in the institute. Researchers recruited to execute various projects of this 229 faculty
So what I would like to say is that we are no longer a new IIT, we are a next generation IIT, and the outcomes are staggering for an institute of our kind. IIT Hyderabad, as mentioned by our director, has a strong culture of innovation, research, and especially working with industry and taking innovation to productization and certain outcomes that I want to talk about. All these incubators that we incubated in different areas, whether it is chip design, space agencies, in this campus, and most of this development has happened in the last few years. 70 plus companies is a very, very large number by any standard. And IIT continuously works with the 70 companies. There are joint research programs, students working with these companies, faculty working with these companies towards taking these technologies to commercial world. We have identified certain grand challenges, and interdisciplinary research is given a very big trust, and especially we have been working on information and communication technologies, 5G, AI, ML, and autonomous navigation. We have made a substantial impact in the global arena with our inventions taken to productization in 5G technology, and IIT has been very well recognized around the world. And with this autonomous navigation system, which fundamentally relies on communication technologies, and artificial intelligence has a very great role to play. And we wish success to the chief investigator in taking this effort forward with this great initiative. Thank you very much. Thank you, sir. I request Dr. K.R. Murli Mohan, Mission Director, NMICPS, Scientist G and Head, Frontier and Futuristic Technologies Division, DST, Government of India, to address the gathering. Good morning, sir. Union Minister for Education, Sri Ramesh Pokhriyal ji, Board of Governors and Chairman, Dr. Mohan Reddy ji, and Director IIT Hyderabad, Dr. Professor Murthy. It is my privilege to be here and to present the vision and as well as the plans of the Government of India in terms of promoting advanced technologies in the country. As it was rightly pointed out that the Department of Science and Technology has launched the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems in 2018. I would like to present what this mission is aiming at and what are the systems that we are planning to create on the country, and how the Atmanirbhar Bharat of our Honorable Prime Minister's vision, how it can be fulfilled in the areas of technology self-sufficiency. Sir, I would like to say that the record time of 6 months, the present government has approved and launched the NMICPS mission. At least in my experience, this is one of the shortest period that any mission was approved and launched. Normally it takes around 3-4 years, but the present government has taken proactive initiative and they promoted these particular technologies and approved this mission at the total cost of 3,660 crores for 5 years. Sir, this mission is aiming at the promoting of all the advanced technologies, starting from artificial intelligence, robotics, machine learning, underwater explorations, and the Internet of Things, and name it, all the 25 the foundational technologies which can foster to promote the CPS technologies countries are engulfed in this mission, sir. So what this mission is aiming at? So fundamentally, sir, this mission is established 25 technology innovation hubs across the country. On an average, each state has got one hub, one innovation hub. IIT Hyderabad has got one hub,
Similarly, IIT Roorkee has got one, IIT Mandi, IIT Guwahati, IIT Palakkad. So on an average, each state has got one technology innovation hub. So these hubs are dedicated for each one of the technology verticals which the mission aiming to promote. And it is a platform to aggregate what we are aiming at is the academia, industry, and government collaborations. All the innovation hubs are started, are already established, and they are created as a Section 8 companies, not for profit. It is both the government and as well as the host institutes have a type of a platform to have both the freedom and as well as operational flexibility in promoting this technology. Sir, each hub is supposed to create the technology innovations in their vertical and human resources development. And also each hub has got a technology business incubator to promote startups. Each hub was given a set of targets, and within the 5 years, we strive to achieve those targets. Is a very different type of model, both financial freedom and administrative freedoms were given to these hubs. Now the mission has been launched in 2018. Now we have created all these 25 hubs and all the Section 8 companies have been created. And now we are in the ramping up stage of creating these technologies. Now the issue is how these hubs are going to get connected with the industry, how they are going to connect with the other academic folks to promote this technology. That is something we are working particular. The platform will provide that type of the opportunity there with the industrialist himself. And also how to connect the venture capitalists to promote these startups that is being nurtured under these hubs is also another model we are working on, sir. So another 2-3 months we will be more clearer about the connecting the venture capitalists, the industry collaborations, and the startup ecosystem and spinning of the companies. So with this, I thank you, sir, for giving me this opportunity, and I wish a success for the IIT Hyderabad in its efforts in developing this technology for the future of the country. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request Professor P. Rajlakshmi, Project Director, to give the introduction to Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation, TiHAN, IIT Hyderabad. She is also the Dean Students at IIT Hyderabad. Good morning, everybody. A brief about the Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. As already pointed out, IIT Hyderabad has been awarded the Technology Innovation Hub on the technology vertical, autonomous navigation and data acquisition systems for UAVs, remotely operated vehicles, ROVs, with a quantum of funding of 135 crores for a period of 5 years. TiHAN and IITH will be the hub for promoting and coming up with research and technology development for safe, sustainable, and smart next generation mobility. The primary focus areas will be the development of real-time autonomous navigation technologies, quantity data acquisition systems for UAVs and ROVs, multi-sensor fusion and perception, AI framework, and end-to-end edge computing architectures, communication and networking architecture for autonomous navigation. Hub will also focus on generating standard operating procedures for these unmanned aerial and terrestrial vehicles, which will be very helpful in policy recommendations for the government. And as part of the hub, we are also planning to develop the testbed for autonomous navigation systems for aerial and terrestrial vehicles. The focus application areas of the hub would be on transportation sector, on agriculture, on infrastructure, and surveillance and environmental monitoring. The different activities of the hub will be such that TiHAN and IITH will be the source of fundamental knowledge
and technology development in this technology vertical of autonomous navigation. We believe this is possible through translational research, which is, will be achieved through strong industry collaborations, through joint R&D projects. Focus on innovation, entrepreneurship, startup ecosystems will also be laid in the hub. Human resource and skill development will be the primary focus of the hub as well, where we wanted to start a new academic program in this area of autonomous navigation. Then we wanted to support different fellowships, starting from masters to PhDs to postdocs, chair professors, faculty fellowship, visiting faculty under the hub. A strong international collaboration, both from the academia and industry perspective, is also envisioned as part of the hub. The hub at IITH is going to be an interdisciplinary hub where multiple faculty from multiple departments, computer science, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, mathematics, design department have come together at IITH to build the strong research and technology development in the autonomous navigation technology. As part of this, we have already started a 2-year MTech program on smart mobility at IITH in this August 2020 session, which is strongly an interdisciplinary program where we have admitted around 17 students from different backgrounds, that is EE, CS, mechanical and civil engineering, coming together doing the interdisciplinary program at IITH, who are admitted through GAVE. So many more such programs we are planning as part of the hub. Again, as part of the hub, as I mentioned before, we are planning to create the state-of-the-art, first of its kind, testbed on autonomous navigation. Exclusive area has been identified within the campus, which I am showing in the map of the campus, for the development of this facility at IITH. So we believe that this autonomous navigation testbed at IITH will be the destination for the development of technology in next generation mobility research. It will provide the platform for collaborative research between academia, industry, government, R&D labs, not only within the country, but an international wide exposure. So with this, we would like to play a small video on the testbed that we are planning as part of the hub at IITH campus. IIT Hyderabad is awarded a Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation and Data Acquisition Systems TiHAN by DST NM-ICPS with a total budget outlay of 135 crores for a period of 5 years. As part of this, IIT Hyderabad has taken a magnanimous effort to develop the first of its kind state-of-the-art integrated testbed on autonomous navigation for terrestrial and aerial vehicles within its campus in the country. Features of the envisaged autonomous navigation testbed includes proving grounds, state-of-the-art simulation technologies like sill, mill, hill, will testing, road infrastructures like intersections, environment emulators, V2X communications, drone runways and landing area, centralized ground control station, mechanical integration facility. Thank you, ma'am. We have Sri Sanjay Dhotri, Minister of State for Education, as our honored guest. Sri Sanjay Dhotri is an eminent parliamentarian currently serving as the Union Minister of State for Education, Communications and Electronics and Information Technology, Government of India. He has been an elected member of the parliament, successfully representing Akola constituency, Maharashtra, since 2004. An engineer by training, a practicing agriculturalist and industrialist, Mr. Sanjay Dhotri has remained active in social and political life for the last 4 decades. He has been public representative, making in the fields ranging from academics to agriculture to new age technology. Shri Dhotri held several distinguished positions and was awarded for his outstanding contributions by Maharashtra Government Industry Award for Excellent Performance 1987 and late Shri Vasantrao Nayak Memorial Award for Outstanding Work in Agricultural Sector 1999. He was the former Vice Chairman of the Maharashtra Council of Agricultural Education and Research, Government of Maharashtra.
He was the director of Maharashtra State Seed Corporation Limited and an executive council member of Dr. Punjabrao Deshmukh Agricultural University. His contributions were well acknowledged at the grassroots level in cooperatives, government institutions on issues of rural development and agriculture as the mainstay. Due to some urgent commitment, the minister could not join us today. However, he has given his message for this foundation stone laying ceremony of the Testbed. The message reads as follows. I congratulate IIT Hyderabad for a new technology innovation hub on autonomous navigation and data acquisition systems for UAVs, ROVs, etc., TiHAN, which is set up here. I'm sure that IIT Hyderabad will emerge as a technological hub for autonomous navigation systems in the coming years. This hub at IIT Hyderabad will importantly focus on conducting fundamental and applied research on the autonomous navigation systems for both the terrestrial and aerial use cases, considering the realistic challenges hindering their adoption in the Indian context. The testbed envisaged will be the state-of-the-art, help validating the autonomous technologies being developed under this hub. With multiple facilities such as smart city zones, vehicle interaction modeling under realistic scenarios, varied road conditions, drone hangars and testing facilities, etc., this unique facility will emerge as a destiny for industries, R&D labs, and academia researching the broad areas of intelligent transportation systems for testing and validation of their technologies during the entire development life cycle. This research will also help in formulating the regulations and standard operating procedures pertaining to autonomous navigation system with respect to the Indian context. With the proven capabilities of the researchers at IIT Hyderabad, I sincerely believe that this hub will place India in an advanced technological frontier recognized globally. I wish the team at IIT Hyderabad great success in leading this hub. Now I thank Sri Sanjay Dhotri sir for this kind message. Now let us know about our Honorable Education Minister of the country, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. Politicians with highly effective personalities like Mr. Maulana Abul Kalam Azad, Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, Mr. V.P. Singh, Mr. Arjun Singh, Bharat Ratna, Mr. Atal Bihari Vajpayee, Mr. Murli Mohan Joshi have served this post of Education Minister in our country. The person occupying this post should not only be interested in politics, but also have a keen interest in education and culture. At this time, the appointment of Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank has been well considered by our glorious Prime Minister, Shri Narendra Modi. Dr. Nishank was first elected to public office in the erstwhile undivided Uttar Pradesh as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly from Karnpur constituency in 1991, followed by 2 consecutive terms in 1993 and 1996. He was then given the status of a cabinet minister in the Uttar Pradesh government for the first time in 1997. He was made the Minister of Uttaranchal Development Department, and in 1998 he was given the charge of Ministry of Culture and Religion. In view of Dr. Nishank's outstanding leadership ability, when a separate government of Uttarakhand was formed for the first time in 2000, once again he was given a big responsibility. He was made the cabinet minister of 12 departments, including finance, village development, medicine. After this, Honorable Nishankji was the cabinet minister of health, medical and family welfare, Ayush, science and technology in the government of Uttarakhand from March 2007 to June 2009. In June itself, Dr. Nishank was made the Chief Minister of Uttarakhand, and he remained in this post till 2011. He was the 5th Chief Minister of Uttarakhand. After stepping down from this post of Chief Minister in 2011, he was given the responsibility of the organization and made the National Vice President of the Bharatiya Janata Party. He held this post till 2013. After this, in 2014, Dr. Nishank won the seat from the Haridwar Lok Sabha with an overwhelming majority of MPs. From then until 2019, he also held the post of Chairman of the Government Assurance Committee of the Lok Sabha. In honor of the Honorable Minister, the Prime Minister of Mauritius has said that Dr. Nishank is the first politician in the world who personifies a blend of politics, literature, and culture. Hailing from a poor family, Honorable Minister's dedication towards
education can be known from the fact that he used to cross the difficult 7 long mountain roads for his studies. Dr. Nishank is not only a skilled politician, but also a competent writer. While in active politics, the work of writing continued, and he has written more than 75 books, which have been published in more than 10 languages all over the world and India. These 75 books include poetry collection and fiction collection, and many of them have been translated into many languages like English, Tamil, Telugu, Marathi, German, French, etc. The first poetry collection, Samarpan, composed by Dr. Nishank, was published in 1983, which was released by former President Dr. Shankar Dayal Sharma. Honorable Minister's books have been unveiled by former President Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, respected politicians like former Prime Minister Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee, former President Shri Pranab Mukherjee, and they have appreciated the works of the minister. Once former Prime Minister Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee, who himself had a great understanding of literature and poem, praised the minister during a ceremony, saying that there is hardly any politician in the world who is active simultaneously in both politics and literature. Dr. Nishank is the first education minister in the country on whose more than 25 works research is going on, and students are preparing PhD and DPhil theses. There have been 7 research and 7 minor research on Nishank, while 10 research and 2 DPhils are going on. Shri Nishank holds an important ministry like the Ministry of Education, is the first such education minister who has got recognition not only in his country but also abroad. While the Honorable Minister have been honored by Prime Minister of Bhutan, Uganda, Nepal and Mauritius, his literary arts have been honored in the UAE, South Africa, Belgium, Ukraine, Indonesia, Japan and Thailand. Despite being the commander of one of the important ministries of the country and being honored from the country and abroad, Honorable Dr. Nishank has a very simple personality, is soft-spoken, and despite his hard work for so many years, he keeps himself ready for the service of the country even today and rests for only 4 to 5 hours throughout the day. Our country is constantly benefiting from such an honorable education minister. We are privileged to have Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, Union Minister of Education, Government of India, here with us today as our chief guest. Now I humbly request Shri Ramesh Pokhriyal Nishank to deliver the chief guest address. TiHAN स्वायत्त नेविगेशन टेस्ट अवार्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सबका बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हमारे राज्य मंत्री श्री संजय जी और इस संस्थान के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT हैदराबाद श्री BBR मोहन रेड्डी जी। मोहन रेड्डी जी हमारे IIT रुड़की के भी BOG के चेयरमैन हैं और बहुत ही विजनरी हैं और विभिन्न आयामों के धनी हैं। हमारे इस संस्थान के BOG के रूप में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। हमारे इस IIT हैदराबाद के बहुत ही विजनरी डायरेक्टर प्रोफेसर VS मूर्ति, जिनके नेतृत्व में ये संस्थान तेजी से बहुत बढ़ रहा है, आगे जा रहा है और नित नए शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया इतिहास गढ़ रहा है। हमारे जो मिशन डायरेक्टर डॉक्टर RK मुरली मोहन जी, जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया है और मिशन डायरेक्टर के रूप में जिन्होंने अपने विजन को इस रूप में आगे बढ़ाने का, और जो ये परियोजना है जो 135 करोड़ की लागत से आज जिसका शिलान्यास हो रहा है 5 वर्षों में जो पूरी होगी, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जी और डीन R&D IIT हैदराबाद, डीन योजना IIT हैदराबाद, डीन एडमिन, डीन PCR प्रोफेसर P राजलक्ष्मी जी, रजिस्ट्रार, सभी फैकल्टी, सभी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, छात्र और मेरे साथ मेरे शासन में जो IITs को देखते हैं अपर सचिव
श्री राकेश जी और सभी जो देश और दुनिया में पूर्व छात्र आज आप इस सुखद अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं इस अवसर पर, जबकि एक ऐतिहासिक काम आज शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है, जो देश की आधारशिला बनेगा, जो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में न केवल आधारशिला बनेगा बल्कि नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं इस खुशी के अवसर पर कहना चाहता हूं कि हैदराबाद में तो वैसे भी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में बहुत ही समृद्धशाली भूमिका निभाई है। हैदराबाद शहर आईटी के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है और इसलिए इसे साइबर सिटी भी लोग अब कहने लगे हैं। आईआईटी उद्योग, आईटी उद्योग हो चाहे इकाइयाँ हैदराबाद में तमाम विभिन्न प्रकार की आईटी से जुड़ी गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हैदराबाद में स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में लगातार प्रयासरत है। और ऐसे स्थान पर हमारा ये जो हमारा आईआईटी है, बिल्कुल युवा आईआईटी, वो अपने छलांग लगाने को तैयार है। वो अपने अनुसंधान के रूप में, अपने नवाचार के रूप में आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में बढ़ते हुए आईआईटी हैदराबाद को उनके इस जो आज जिस शिलान्यास हो रहा है स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम का मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। ये सिस्टम अगली पीढ़ी को गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक साबित होगा। भारत सहित विश्व के कई देशों के लिए ये प्राथमिक तकनीकी के लक्ष्यों में से एक है। यदि आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ऑटोमेशन नेविगेशन सिस्टम 21वीं सदी में एक शक्तिवर्धक की तरह होगा, जो नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि 21वीं सदी का नया भारत जो टेक्नोलॉजी का भारत होगा, प्रौद्योगिकी का भारत होगा, वो भारत जो स्वर्णिम भारत होगा, वो भारत जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और श्रेष्ठ भारत होगा। और इसलिए वो श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की उस लाइन, उस दिशा में आज एक ऐसा मील का पत्थर आप रख रहे हैं। इसलिए मैं आपके सारे स्टाफ को, इस परिवार को, आईआईटी के इस परिवार को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार की एक समृद्ध विरासत है। स्कूल से ही एक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ज्ञान प्रणाली द्वारा समृद्ध होता है। विज्ञान का यह ज्ञान, जो विज्ञान का यह ज्ञान प्रयोग और परीक्षण की आधारशिला है, उसी पर यह आधारित भी है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना हमारी निश्चित रूप में हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आजादी के समय से ही तेजी से वृद्धि कर रहा है। इसका श्रेय भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव रखी है। चाहे वह नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सीवी रमन हों, आधुनिक विज्ञान के संस्थापक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हों, चाहे देश के परमाणु और ऊर्जा कार्यक्रम के वास्तुकार डॉक्टर होमी जहांगीर भामाजी हों, या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई हों, अथवा हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हों, सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अत्याधुनिक काम किया है और एक से बढ़कर के एक कदम पर आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार हैदराबाद शहर में पैदा जो हुए हैं डॉक्टर एस.सी. रामकृष्ण राव हों, राम गोविंद राजन जी हों, रफ़ी अहमद हों, अर्जुला रामचंद्र रेड्डी हों, जैसे तमाम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, यदि उनकी एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। और मैं सोचता हूं कि ये जो आपका संस्थान है, ये संस्थान भी कम समय में काफी अच्छे तरीके से, इसमें मैं देख रहा हूं कि आपके संस्थान ने
रैंकिंग प्रीमियर NIRF में जो है 10वां शीर्ष संस्थान 10वां स्थान प्राप्त अपने स्थान बनाना सुनिश्चित किया है। अटल रैंकिंग में भी आप शीर्ष 20 के तहत आपको स्थान प्राप्त हुआ है। और जिस तरीके से आप 200 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, 5 अनुसंधान और उद्यमिता केंद्र चला रहे हैं, और ये जो संस्थान की जो स्वीकृति मिली है वो 500 करोड़ से भी अधिक की है, और उसमें भी बहुत बड़ा काम होगा। PhD के विद्वानों की कुल छात्र संख्या लगभग 30% आपके यहाँ है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि 1500 से भी अधिक शोध प्रकाशनों के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। पेटेंट और के लिए शोध पत्र और पेटेंट आपने किए हैं। 300 प्रायोजित परामर्शी परियोजनाओं और 50 उद्योग सहयोगियों के साथ नवाचार में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि आपका जो समन्वय हो रहा है उद्योगों के साथ हो रहा है, नए विजन के साथ हो रहा है, आप प्रैक्टिकल रूप में जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी मेरे लिए खुशी है कि जिस तरीके से नवाचार के साथ आप पूरी दुनिया के लोगों के साथ, आप अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, यूरोप के लगभग 50 से अधिक विश्वविद्यालय, दुनिया के विश्वविद्यालयों के साथ आप पारस्परिक शोध, अनुसंधान और कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी का विषय है। और वैसे भी आपको मालूम है कि अभी देश ने जो हम लोग स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 128 विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, वही हम स्ट्राइड के साथ अंतर विषय शोध कर रहे हैं। हम स्टार्स के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इम्प्रिंट के तहत हम तकनीकी के क्षेत्र में कर रहे हैं। और अब तो जो नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, जो नए आयाम और नए के पूरे देश में आमूल चूल परिवर्तन के साथ आगे आ रही है, वहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा, और अपने तरीके का शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में वो एक नया आयाम स्थापित करेगा। दूसरी ओर तकनीकी को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना और तकनीकी को शीर्ष तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक जाना और शीर्ष तक पहुंचाना, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये दो के स्थापना इस देश को अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर बढ़ाएगी। मैं जरूर ये चाहता हूँ, ये इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब को, प्रोफेसर मूर्ति को, कि हमारे छात्रों में और हमारे प्राध्यापकों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पीछे का जो कार्यकाल आया है वो पैकेज की दौड़ लगी है, लेकिन पेटेंट की दौड़ नहीं लगी है। जिस दिन हम पेटेंट की दौड़ शुरू कर देंगे, पेटेंट की होड़ शुरू करेंगे, उस दिन ये जो आत्मनिर्भर भारत तो दुनिया के लिए एक नई आधारशिला पर खड़ा होगा। और जो नए तकनीकी के साथ, नए वैज्ञानिक विश्लेषणों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे पास जो पीछे का, इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति भारत केंद्रित हमने कहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी इस पीढ़ी को उस पर भी शोध और अनुसंधान करके आगे जाना चाहिए। यदि इस देश में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत पैदा हुआ है, तो वो जो थाती है वो उसको आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं दुनिया के लिए। यदि नागार्जुन रसायन शास्त्री नागार्जुन हो तो उसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो तमाम पीछे की चीजों को शोध और अनुसंधान के साथ कैसे व्यापक रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत है। और आर्थिकी के क्षेत्र में भी ये देश बहुत आगे रहा है। यदि मैं सोचता हूं कि लॉर्ड मैकाले के आने से पहले के भारत को आप देखेंगे तो तकनीकी के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, नवाचार के क्षेत्र में हो, पूरी दुनिया को भारत ने मार्गदर्शन दिया है। सामर्थ्य है भारत में, सोच भी है, सामर्थ्य भी है, विजन भी है, विजन को तब्दील करके जमीन पर क्रियान्वित करने का मिशन भी है, क्षमता भी है। और इसलिए ये जो मेरे संस्थान है, जो शीर्ष संस्थान है, आज ये उनके सामने वो चुनौती है कि वो विश्व गुरु भारत चाहिए जिसने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान
टेक्नोलॉजी और नवाचार में शीर्ष अपने पराकाष्ठा को प्राप्त किया है और दुनिया ने उसको जाना है, महसूस किया है। मुझे लगता है कि आज वो वक्त फिर आ गया है जब हम अपनी प्रतिभा को उनके साथ, ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है, इस देश में बिखरी तमाम समस्याएं हैं, उन बिखरी समस्याओं और विषयों को शोध और अनुसंधान के साथ इन 135 करोड़ के लिए जब हम खड़ा करेंगे तो सारा विश्व आपके पीछे खड़ा होगा। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिकी की बात करते हैं, यही संस्थान इसकी आधारशिला बनेंगे। यदि 21वीं सदी के भारत, जो नया भारत हो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसका रास्ता भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप होकर के जाता है। आज जब कृषि के क्षेत्र में हूँ, अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे निदेशक महोदय ने भी कहा है और हमारे बीओजी के चेयरमैन ने जिन विषयों को स्पर्श किया है, चाहे मौसम परिवर्तन की चुनौतियां हों और चाहे समाज में बिखरी एक से लेकर के तमाम, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में जो बिखरी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का जो मुकाबला होता है तो एक नई चीज सामने आती है। मुझे भरोसा है, विवेकानंद जी कहते थे, जितना गहरा संकट होता है और जितनी बड़ी कठिनाई होती है, उतनी बड़ी चुनौती और सफलता भी होती है। तो जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता भी होगी। मुझे भरोसा है कि जिस नए शोध और अनुसंधान के साथ मेरा IIT बहुत तेजी से काम कर रहा है, उस सोच के साथ, पूरी ताकत के साथ, नवाचार के साथ, नए प्रमाणिक तौर और तरीकों के साथ आगे बढ़ रहा है, निश्चित आप एक नया आयाम स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं समझता हूं कि जो हैदराबाद जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण जो विकसित आपने किया है, इस तरह का जो नवाचार निश्चित रूप में अभूतपूर्व है और आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा है कि हम नई शिक्षा नीति में शायद दुनिया का ये पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल स्कूली शिक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आ रहा है। जो स्कूली शिक्षा कक्षा 6 से ही जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को 6वीं से ही इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल स्ट्रीम को हम ला रहे हैं, ये पहला होगा, दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो व्यावहारिक रूप में स्पीड को खड़ा करना चाहता है। और आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और IIT हैदराबाद ने जो कोविड-19 के जो परीक्षण है, श्वसन मास्क है, और बहुत सारे क्षेत्र में आपने जो काम किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, उसको आपने बहुत तेजी से क्रियान्वित करने की दिशा में काम किया है। और स्वाभाविक ही है, आपने अभी चर्चा की है कि नवाचार से जो ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग है और ईज ऑफ गवर्नेंस है, और इसका माहौल इसी से शुरू होगा और इसी की आज देश को जरूरत भी है। निश्चित रूप में जो आपके ये नए नवाचार के साथ जो आप नया अनुसंधान कर रहे हैं, एक माहौल सृजित होगा वहां पर, माहौल छात्रों के बीच, प्राध्यापक तो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी देश की। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नित नए विषयों की खोज और अनुसंधान आप कर रहे हैं और बहुत तेजी से उसको बढ़ रहे हैं, जो हमारा ज्ञान और जो पुरातन, जो हमारे विज्ञान और विज्ञान की जो चीजें हैं, उनको भी नवाचार के रूप में आप आगे लाने में निश्चित रूप में सफल होंगे, ऐसा मैं भरोसा कर रहा हूँ। और जो नई शिक्षा नीति है, इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको बिल्कुल नए परिवेश के साथ हम इसको लाए हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले यदि आप शिक्षण पद्धति में देखेंगे तो विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य की धाराओं के बीच एक कठोर एक लाइन खींची हुई थी, वर्गीकृत था, उसमें बिल्कुल दीवार थी। अपने पसंद का छात्र जो है अध्ययन नहीं कर सकता था, अपने विषय को नहीं प्राप्त कर सकता था, उन्हें उन्हीं विषयों का अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जो उसको दिया जाता था। लेकिन अब इस NEP जो नई शिक्षा नीति आने के बाद,
तो ज्ञान, मानविकी, वाणिज्य की ये जो 20 की जो धाराएं हैं, इनको इस जो बाधा को अब खत्म कर दिया है। अब पूरा का कोई किसी भी विषय को ले सकता है, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को जोड़ सकता है और बिल्कुल नई दिलचस्पी के साथ वो पूरे नए आयाम के साथ बहुविषयक, जब चाहे वो आ सकता है, जब चाहे छोड़ सकता है, जहां से चाहे वो काम फिर शुरू कर सकता है। लेकिन यदि वो 1 साल और 2 साल भी कुछ करता है तो उसका वो वर्ष भी खराब नहीं होगा। 1 वर्ष में यदि छोड़ करके वो परिस्थिति वर्ष जाना भी चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल में जाता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में जाता है डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 2 साल में ही फिर लौट करके या 1 साल में लौट करके फिर वो आना चाहता है तो वो फिर शुरू कर सकता है। उसको उसका जो क्रेडिट है वो बैंक को जमा होगा, जहां जमा है वहीं से वो शुरू कर सकता है। आपके लिए मैं छात्रों आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए पूरा मैदान खाली है। ऐसा अवसर है जब आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और कुछ भी करने के लिए आपको पूरा मैदान खाली है। पूरी ताकत के शोध, अनुसंधान और नवाचार आपके पीछे दौड़ रहा है। आपको आगे दौड़ना है, ये पीछे साथ चल रहा है आपके। तो मुझे लगता है ऐसा अवसर कब आएगा? ये तो नए भारत का, स्वर्णिम भारत का नवोदय है और इसका पूरा उपयोग हम लोगों को करना है। मुझे भरोसा है कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद वो चाहे उच्च शिक्षा में हम लोगों ने तमाम प्रकार के नए नए प्रयोग करने की जो बात की है और जो भारत जहां उस पर शोध हो गया वहां से आगे कैसे बढ़ सकता है। अभी तक यदि जब हम देखते हैं तो मैं पीछे के समय से जब देखता हूं तो पीछे 10 साल 15 साल में जो देश पेटेंट में हमारे साथ थे उन देशों ने छलांग मारी है। पीछे 10 और 15 सालों में हम पेटेंट का जो और शोध और अनुसंधान की जो संस्कृति उससे थोड़ा हम दूर गए और इसी का परिणाम रहा है कि हमारे बच्चों में विदेश में जाने की होड़ लग गई। वहां उनको लगता है वो प्रतिभाशाली तो वहां चला गया। हमारे देश का पैसा भी, प्रतिभा भी देश के काम नहीं आई, वो चला गया। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में हम दुनिया के वो शीर्ष विश्वविद्यालय, जो शीर्ष 100 विश्वविद्यालय, उनको अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर, अपने देश में आमंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन हम ज्ञान और ज्ञान प्लस में जो अध्यापक बाहर से आते हैं उनको तो आमंत्रित कर ही रहे हैं। ज्ञान प्लस में हमारे जो ये अध्यापक है, फैकल्टी, वो भी दुनिया में जा सकते हैं और उनको भी दुनिया में जाना चाहिए। ये भी करके हम ला रहे हैं और इसलिए ये स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोग, कुछ तो चीजें हमारी ऐसे हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में इसलिए जा रहे हैं केवल लेने के लिए। हमें सामर्थ्य है, क्षमता है कि हम कुछ भी दे सकते हैं और इसलिए देने की स्थिति अब आनी चाहिए। स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि स्टडी इन इंडिया में इस समय 50,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो दुनिया के देश आ रहे हैं और हमारे इस IIT में आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र शोध और अनुसंधान के लिए आ रहे हैं। हमारे IITs में आ रहे हैं जिनके साथ अनुबंध हो गया और वो आगे बढ़ेंगे। लोगों को भरोसा है हमारे IITs पर। और ऐसा नहीं है, हमारे ये जो IITs हैं ये बहुत समर्थवान है। पूरी दुनिया में प्रबंधन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो आपके जितने छात्र हैं, जितने मेरे IIT के पूर्व छात्र हैं, वो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, इसके भी प्रबंधन के शीर्ष क्षेत्र में CEO जो है इन IIT से निकलने वाला मेरा छात्र पूरी दुनिया में लीडरशिप दे रहा है। और इसलिए हमने स्टे इन इंडिया कहा है। इस समय जो लोग बाहर जा रहे हैं, लगभग 8 लाख छात्र बाहर चला जाता है और प्रति वर्ष लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया दुनिया में मेरे देश का जाता है। मेरे देश का 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष और 8 लाख छात्र जाते हैं, प्रतिभा भी चली जाती है, पैसा भी चला जाता है और वो दूसरे देशों के बढ़ाने के काम में आ रहा है। मैं इस देश के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, अब वक्त आ गया इस हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विजन के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति, टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बनने के लिए हमको सामर्थ्यवान बनकर के खड़ा होना पड़ेगा। यह हमारे सामने अवसर है। जहां हमारे सामने चुनौती है, यह हमारे सामने अच्छा अवसर भी है जहां हम दुनिया को ये बता सकते हैं न हमें भी विजन है, हमें भी क्षमता है, हम भी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं है। और मुझे भरोसा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप इसको आगे बढ़ाएंगे।
जलवायु परिवर्तन की दिशा में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूं। IIT हैदराबाद द्वारा 5G तकनीकी पर भारत का पेटेंट हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ आपको। मूर्ति जी, आपने जो ये 5G वाला ये जो पेटेंट वो किया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे देश के लिए, और मुझे भरोसा है कि जो आने वाला युग है वो 5G का ही युग है, और उसकी संभावनाओं को आपने पहले से तलाश और तराश करके आप खड़े हो रहे हैं, अपने इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा विजन है, और आपने केवल विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों में भी आपने बढ़ करके आपने उन्नत भारत में अच्छा काम किया, स्वच्छ भारत में आपने अच्छा काम किया। मैं अभी जब समीक्षा करता हूं तो मुझे लगता है कि आपने ये केवल यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में भी आपने सामाजिक क्षेत्र में लोगों के साथ जोड़ करके संस्थान को व्यावहारिक रूप में, चाहे उद्योग हो चाहे समाज हो, उनके साथ और देश की जो आवश्यकताएं हैं और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, इन सब का मिश्रण करके आप पाठ्यक्रम को भी तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सुख का विषय है, मेरे लिए ये खुशी का विषय है। मुझे भरोसा होता है जब मैं आपके IIT के बारे में अध्ययन करता हूँ और समय समय पर मैं बातचीत करता रहता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है कि नहीं, मेरा IIT बहुत अच्छा काम कर रहा है। मानवता की भलाई के लिए अभी हम लोगों ने कृषि और हवाई वाहनों के उपयोग के, बेहतर फसलों के विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये मेरे देश के लिए तो अच्छा ही, लेकिन दुनिया का जो मेरा भारत है वो विश्व गुरु के रूप में रहा है। इसके बारे में हमेशा कहा है, एतद्दिश प्रसुतस्य सकाशादक निर्जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम सत्सरन् पृथ्व्यां सर्व मानवा। हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। वो परिवार वही मान सकता है जिसमें ताकत होगी, उस परिवार को संभालने की क्षमता और ताकत मेरे हिंदुस्तान के अंदर है, और इसीलिए हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है। नई धरती पर हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए, यदि एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये है हमारी ताकत, ये हमारी भारतीयता का जो संस्कार है, जो विजन है, जो मिशन है, इसको लेकर के चलना है हर क्षेत्र में हमको, इसको कभी भूलना नहीं है। यही भारत की आत्मा है। आज विश्व में यदि विश्व गुरु के रूप में रहे तो केवल ज्ञान और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नहीं, जो देश केवल तकनीकी के क्षेत्र में और आर्थिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे वो विश्व गुरु नहीं कहलाए, विश्व गुरु मेरा भारत कहलाया है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में नहीं, जीवन दर्शन के क्षेत्र में भी, जीवन मूल्यों के क्षेत्र में भी वो हमेशा पूरी दुनिया की मानवता को लेकर के चला है। अंततोगत्वा शोध और जितने भी करें मनुष्य के लिए हो रहे हैं। दुनिया के किसी भी छोर में रहने वाला मूल केंद्र तो मनुष्य है, ये व्यक्ति है, ये प्राणी है। तो इसलिए उस प्राणी को केंद्रित करके हमारा विचार रहा है हमेशा से, और इसीलिए इस विचार को हम आगे बढ़ाने के लिए हम आगे चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपने ये जिस तरीके से स्वायत्त स्थलीय वाहन सुरक्षित परिवहन में सहायता करेंगे, सैन्य निगरानी के उपयोग की दृष्टि भी हमारे लिए ये स्थिति बहुत मजबूत होगी। भारत वर्तमान में कृषि सर्वेक्षण, निगरानी, ऊर्जा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में हवाई और स्थलीय स्वायत्त वाहनों के प्रयोग में ये गति प्राप्त कर रहा है, प्रगति प्राप्त कर रहा है। और वहां पर जो ये आपका जो ये नया ये अनुसंधान होगा जिसकी आज शिलान्यास हो रही है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो सकता है। और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ जो लोग इससे पूरी तरीके से जुड़े हैं। मुझे भरोसा है कि इसके होने से ये जो भारतीय परिदृश्य में न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को इसका मार्गदर्शन मिलेगा, और हम पूरी ताकत के साथ इस जो आज इसका जो शिलान्यास हो रहा है हम इसको आगे बढ़ा सकेंगे। मैं आप सबको इस अवसर पर, जबकि आप बहुत सारे विजन को लेकर के इस 2008 में शायद आपका क्या स्थापना हुई है, और 2008 से लेकर के और आज आप 12 वर्षों की इस आयु में आपने छलांग मारी है। और मोहन रेड्डी जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, और आपके डायरेक्टर को भी बधाई देना चाहता हूँ, आपके पूरे इस स्टाफ फैकल्टी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। यंग फैकल्टी, अभी मैं देख रहा था 38 औसत
40 वर्ष का आपकी फैकल्टी का औसत 40 वर्ष है, यंग है, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मेरी शुभकामना कि आज जो ये अवसर है, ये आज का दिन न केवल IIT हैदराबाद के इतिहास में बल्कि देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इस शुभकामना के साथ मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your inspiring words. We will now have the inauguration of the foundation stone. I am really grateful to our Minister Mania Nisha Priyarji for being here, for unveiling this. On your behalf, sir, I am doing it. I would have been really grateful if you have been here with us and do this, and because of this online nature. So please give me the opportunity on your behalf for unveiling this foundation stone. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I request Professor C. Krishna Mohan, Dean Public and Corporate Relations, to propose the vote of thanks. Yeah, good afternoon all. So it's a really great honor and privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion of foundation stone laying ceremony of the TiHAN Autonomous Navigation Testbed at IIT Hyderabad. First and foremost, I thank our chief guest of the function, Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal who, despite his busy schedule, has found the time to grace this occasion and give the valuable message to not only IIT Hyderabad, but to the entire nation. And I also express my heartfelt thanks to the Honorable Minister of State of Education, Shri Sanjay Dogre, for his valuable thoughts on this occasion. So we are also grateful to Dr. K.R. Murli Mohan, Mission Director, NMICPS, Scientist Head, Frontier and Futuristic Technologies Division, DST, Government of India, for his words of encouragement. We thank him for his interest and continued support to IIT Hyderabad. I thank our well-wisher and beloved chairman of Board of Governors IIT Hyderabad, Dr. B.V.R. Mohan Reddy Garu, a recipient of Padma Shri, for his stewardship and support and vision and commitment to IIT Hyderabad. I thank our beloved director, Professor P.S. Murthy, for his unstinted support and for his vision for IIT Hyderabad and taking this project forward. So my heartfelt thanks to all the deans, HODs, and faculty for their help, support, and the hard work they have put in to make IIT Hyderabad today what it is. I owe special gratitude to the team from the Ministry of Education who worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable one. I thank the members of the media for evincing interest in covering the event. I thank all the distinguished invitees present here and accepting our invitation. Last but not the least, I thank our Professor Rajalakshmi, Project Director for TiHAN, and team at IIT Hyderabad for your cooperation and making this function a resounding success. Finally, I take leave with this inspiring quote by Winston Churchill: "Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Thank you. Once again, thank you everyone.
Thank you. Thank you for having. Thank you. I request Raji, Kiran, and Krishna to come on. But we'll have a group photo, sir, with you. Please. Registrar, Manohar ji, see that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Yes. But sir, can we have one more this light? Bhaiya, you light on the green. It is time. Yeah. Thank you. Yes, please. So, Minister, please rise for our national anthem. We have a skill. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे